Nilesh. Or Sudhanshu, whosoever, both can come. No. So, Yeah, Nilesh, would you like to share something in this or share screen? You have to do something. hello, Mr. Nilesh, you are there? Hello. Mr. Nilesh, you are getting me? His name. I think he's not there. I think Sudhanshu, can you call him up? He was here Yeah. short while ago. Yeah, but yeah, I yeah. can't see him. He did mention. That's what I. Ah. हाँ आपका ड्रॉप हो गया क्या? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ठीक है तो जस्ट एक मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए. ठीक, ठीक. So he just joining, कुछ ड्रॉप हो गया था. Anyhow. Okay. So we can start with, yeah. I think so. You can start the session. Yeah. So welcome to all the participants. As we all know, this entrepreneurship is a very interesting subject, and you know, I think you are from like different institutes. So management, in the subject management, we have different topics. So entrepreneurship is also a part of it. So what we have done is we can come down to a specific one, that is the startups and other things. But what we have done is on point wise basis, we have made a presentation. On that basis only, we'll be briefing you about it. So we'll be joined by Mr. Nilesh also. And Mr. Nilesh is basically has a corporate experience of last 20 years, has an experience of 20 years in corporate. And his last assignment was in telecom, Airtel, ASL, different companies. And presently he is running a company called #Bazaar. So #Bazaar is into basically social commerce. So that's another way of like how you can entrepreneurship how you can take it forward. So that's how we will brief you how and what are the steps. So which can help you. As far as I am concerned, I am like I have say about 30 years of experience in investments. So startups have become a very interesting topic, and yeah, Nilesh ji is also here. Startup is a very interesting subject, and you can understand from that around 96,000 odd startups are already registered in India, and now around the market valuation of these companies are around 400 billion plus, and around 7 lakh people are employed in this industry. So that is the size of industry. It has grown in the last 6-7 years, and it is very interesting. So now Mr. Nilesh ji is there. He'll share the screen, and point wise we'll be briefing you about. Yeah. Thank you, Sudhanshu ji. Yeah. I think last moment something happened, so I had to reconnect. Let me just share the screen, please. I hope this is visible to everyone.
Yes. Yes, yes. Thank you. So first, I'll just give a brief intro. So I happen to be the COO and the director for one of the startups called #Bazaar. And in today's session, what I, along with Sudhanshuji, are going to talk about is regarding the ideation and the startup business planning process. So when we talk about anything like this, I'm sure all of us have loads of ideas. Yes. And as I usually also say, when I'm talking about any topic, it is always good to have a two-way communication. So it will be great if you guys can keep using the chat facility and keep on answering the type of questions which I am asking. So are we in for that? You can just type in yes or whatever you want in the response on the chat. So when we talk about ideas, we say ideas are important. But when we talk about ideas and they are important, what is more important when we talk about startups? There are two things I have posed as maybe a multiple choice question for you. Whether it is the idea generation that is more important or the idea validation. Can I have a couple of responses from you guys, please? Come on. Quickly, boys and girls, you must respond. Shashank, Srishti, Shahil, Kajal, Anuja, I can see your names. Come on. Just unmute and tell me what is more important, idea generation or idea validation? When we're talking about a startup or a business. Idea generation. Idea generation, sir. Idea generation. Very good. Idea generation is important. But what is idea validation then? When we talk about idea generation, that is one part of it. Is idea validation also important? Yes or no? Say yes or no. Yes, Kajal, you was telling that idea validation. Can I speak? Okay, there is one yes. Yes, I can see Ankit Upadhyay also saying yes. Ritu Singh saying yes. Very good. Good. There are many yeses now. Okay, good, great. So, आप में से कई लोग कह रहे हैं generation भी important है and validation is also important. Thank you, Kashish. Thank you, Namrata. Thank you, Deepika. So I think this is the type of response we would look at while we are running this session. Now, idea generation आप कह रहे हैं important है और idea validation भी important है. लेकिन वो क्या techniques हो सकती हैं जिससे आप एक business के लिए, अपने business के लिए या अपने startup के लिए idea generate कर सकते हैं. I'm sure many of you are students who are pursuing some of your dreams. So what are those techniques जो आप यूज करते हैं ताकि आप आइडियाज, नए आइडियाज को जनरेट कर सकें? कुछ आप लोगों ने यूज किया है अभी तक? Yes or no? अगर किया है, let me know what are those things. So I can see a couple more yeses from Vikas and Isha. Good. Any specific type of idea generation tool जो आप लोगों ने अभी तक यूज किया हो? See, जिन्होंने नहीं किया है वो no लिखते हैं. Let them write no if they have not. Yeah, whatever the case is. देखिए आप yes भी कह सकते हैं, आप no भी कह सकते हैं, और अगर आपने यूज किया है तो आप बता सकते हैं कि ये एक टेक्निक है जो हम लोगों ने यूज करी थी या मैंने यूज करी थी ताकि मैं अपना बिजनेस शुरुआत कर सकूं. Yes, Ayushi has said something analysis of trend. Sorry? Ayushi has said something analysis of trend. That's good. Right.
Thank you, Ayushi. Analysis of trends. I will take this up while we are discussing this. Anybody, anything else? Shahil Qureshi says no, not an issue. चलिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आइडिया जनरेशन में काम आती हैं. आयुषी, आई विल जस्ट से जो आपने ये आंसर दिया, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. हाउएवर, मार्केट ट्रेंड्स की जब आप एनालिसिस करते हैं, दैट इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आइडिया वैलिडेशन. क्योंकि पहले एक आइडिया लाना जरूरी है, उसके बाद उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं यूज, उसकी हम बात करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करते हैं आइडिया जनरेशन के कुछ टूल्स की. यहां पे मैं आपको अभी सिर्फ 3 टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं. एंड आई एम श्योर विद all of you around, Sudhanshu ji would love to add a few pointers under this as well. First is brainstorming. Now, brainstorming is something जो आप अलग-अलग ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है आप जिस डायरेक्शन में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप अपने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में उसके कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा आइडिया जनरेशन टूल है जिससे आपको मल्टीपल इनपुट्स मिलते हैं. थैंक यू अभिषेक वर्मा फॉर स्टेटिंग माइंड मैपिंग, बिकॉज दैट इज अ वेरी पावरफुल टूल जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे आगे. नाउ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज, आपका ग्रुप डाइवर्स होना चाहिए. आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो मार्केट में या उस चीज से रिलेटेड कुछ जानकारी रखते हो. कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं. रीजन बीइंग, टारगेट कस्टमर्स को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम उनके पेन पॉइंट्स नहीं पकड़ पाएंगे. एंड दैट पेन पॉइंट्स, कैचिंग ऑफ दोस पेन पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर एबल टू very clearly state a problem, and then as a business or as a startup rather, you can provide एक ऐसा solution जो उस pain point को कम करता हो. Right? Sudhanshu ji, if you would like to add something to this on brainstorming. Am I audible? Yeah. Yeah, okay, okay. So fine, I'll just move on. We move to the next point, which is asking what if. What do we mean by asking what if? What is it जो आपको समझ में आ रहा है? What if पूछ के कोई आइडिया कैसे जनरेट कर सकता है? Can I have a few responses from you? What if कैसी टेक्निक हो सकती है? इससे ये पूछ के कोई बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है? आइडियाज कैसे जनरेट कर सकता है? सर, ऑल्टरनेट्स. ऑल्टरनेट्स मतलब थोड़ा सा उसमें डिटेल करेंगे आप प्लीज? सर, सेकंड ऑप्शन. सर, सेकंड ऑप्शन. यस, सेकंड ऑप्शन, इट इज ऑल्टरनेट. लेकिन इसको आप थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं प्लीज? व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इफ, तो यस, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स की, लेकिन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट? Anybody? Ankit says we combine two unrelated concepts. Okay, very good. Somebody said mind mapping. Who was that? Yeah, mind mapping is already there. Mind mapping is actually a tool जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. But what if का scenario क्या हो सकता है for business idea generation? Anything you can think of. एक समय था, अगर मैं बात करूं, probably before home delivery and these things were there, right?
ये Ola, not Ola rather, Zomato or Swiggy. Somebody was thinking, what if we create something जिसको जो भी खाना पीना हो, इतने सारे रेस्टोरेंट्स है यार, अब जरूरी तो नहीं है ना हर आदमी वहां जा सके. What if we can have all the restaurants delivering those food products at their home, and that is how probably Zomato or Swiggy got born. ये एक what if scenario था idea generation का. Abhay says to provide valuable insight to make more informed business decisions. True. So what is that valuable insight which can be provided? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि what if कितनी तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं. AI की अगर हम बात करें इस समय चैट जीपीटी, आई एम श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट चैट जीपीटी या यूज करते हैं आप चैट जीपीटी? जस्ट राइट आई डू इन द चैट अगर आप करते हो तो. अंकित दास, अभय, विकास, वंडरफुल. And I can't even read the names with the speed with which I do because everybody is using AI. Somebody, thank you Deepika, thank you Chanchal. Now अगर आप देखें, somebody was thinking about यार क्या किया जाए. So the person brainstormed about a few things जो लोगों को चाहिए. Thank you Isha, thank you Ritvik. फिर they asked, यार what if we create something जिससे लोगों को वो मिल सके जो वो चाहते हैं. उनको गूगल पे जाके तो इतने सारे एक लंबी लिस्ट मिलती है, and then they have to browse through that and then get to the exact point that they are searching for. And जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, Google is always a search tool and not a research tool, right? तो रिसर्चिंग के लिए आपको बहुत से और भी वेबसाइट्स, पोर्टल्स सर्च करने पड़ते हैं जिससे आप अपने उस क्वेरी को सही तरीके से उसका आंसर ढूंढ पाए. बट चैट जीपीटी इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू डू दैट. एंड राइट नाउ इवन बिजनेसेस, अगर आप देखें तो कितने सारे बिजनेसेस हैं फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, फॉर बिजनेस मेल्स, फॉर सो मेनी थिंग्स पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ चैट जीपीटी. वो एक व्हाट इफ सवाल पूछा गया था कहीं. इस तरीके से आप नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अगर आप उन चीजों के बारे में सोचें कि क्या अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो उससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं जो मेरा टारगेट ऑडियंस फेस कर रहा है. दैट इज द पावर ऑफ आस्किंग व्हाट इफ. नेक्स्ट, अनदर वन इज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक और आइडिया जनरेशन एक ऐसा टूल है जिससे बहुत सी चीजें आपको ऐसी पकड़ में आती हैं जो शायद लोग अनदेखा कर रहे हैं या उनको पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ करने से शायद मैं कुछ नया बिजनेस आइडिया बना सकता हूं. I'll take up an example of Oyo hotels, and especially अगर मैं बात करूं, ठीक है, everybody knows that's a big startup, everything is there, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय ट्रैवल इंडस्ट्री का क्या हुआ था? Write your responses in the chat. Many of you know, right? You can't move out. Yeah, Ankit says shut down. और Oyo करता क्या था? Oyo was usually providing the hotel rooms. So what was the observation that they did? And then how did they pivot their business model that they remained in existence until they are still flourishing? ऐसा क्या किया उन्होंने? Yes, Abhimanyu, yeah, Oyo is providing or rather was providing hotel services. और इसके अलावा क्या उन्होंने और किया? Anybody of you know during the lockdown and all क्या क्या किया उन्होंने जिससे उनका बिजनेस उस समय भी चला? ठीक है, not at the level of what they were doing, but जहां तक वो पहुंचे. If you don't know, just write no. If you do, let me know, please. Very good, Kajal. Thank you. COVID centers. So they actually converted some of those properties into COVID centers for the people who were COVID affected, and they were providing that at a small cost, which helped them maintain their business. Yes, Arya, I think you have raised your hand, please.
आर्य त्रिपाठी, आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू आस्क समथिंग? So fulfilling social responsibility was done by OYO during COVID times. वेरी गुड, यस। तो जैसे कि काजल जी ने कहा वैसे ही आप भी कह रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो आइडिया जनरेट करना होता है। अब आइडिया जनरेट करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडिया कब जनरेट करना चाहिए? Before you start the business, when you have started the business, or when everything is running smoothly? A, B, C. Before. Before. काजल कह रही हैं when there is a need. अंकित कह रहे हैं before the business. Okay, very good. Abhay says when it's needed. Wonderful. Okay. एक स्टार्टअप के लिए ये एक ऐसी चीज है which never ever stops. And why am I saying this? Kashish says when there is a need. Exactly. And every time in a startup, innovation is something which is there. And there is always a need for it. So you should do it before you start off the business. Then while you are ideating and doing the things, तब आपको यूज करना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, राइट, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। रविकांत जी, आई थिंक आप म्यूट पे नहीं है। थैंक यू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा ओयो होटल्स का। Now what happens is, ओयो होटल्स ने तब भी सोचा जब वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके थे अपना बिजनेस। However, they still had to think something because of a new situation they were in, which was COVID lockdown. So that is some basic about the idea generation tools that I wanted to share with you. I would just request Sudhanshu ji to please add on to the topic of idea generation and the tools that you can make use of. तो अभी जैसा नीलेश जी ने आपको ब्रीफ किया, और एक वक्त में लाइक ये जो स्टार्टअप है ओयो, वो अपने में करीब करीब 10 बिलियन की वैल्यू उसकी पहुंच गई थी। एंड एवरीबडी सॉ कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री भी, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्री सूजी का है। बस Sudhanshu ji, सूजी का तो voice कोई वांधा नहीं आपको। is quite low. दीदी बोले ना। बस बस जी जी। हाँ जी, कैन आई कंटिन्यू? हाँ, तो वो पीरियड भी था जिस समय उसने स्टार्ट किया। Sudhanshu ji, sorry, your voice is not loud enough. अच्छा, अब that's the maximum I can do at the moment. इट्स ओके। It's okay. तो एक वो पीरियड भी था जब उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया, एक वो पीरियड था जब उसमें उसकी वैल्यूएशन करीब 10 बिलियन के करीब पहुंची, और सब्सिक्वेंटली वो पीरियड भी आया जब बिल्कुल शायद अगर हम कोविड के हिसाब से देखें तो वो इंडस्ट्री ही बिल्कुल सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री, क्योंकि आप उस हिसाब से देखें कि रेवेन्यू आपके पास ना आए और आपके एक्सपेंसेस बने रहें तो किसी का भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश आइडिया जनरेट किया, फ्रेश उसी को इम्प्रोवाइज किया। उस इम्प्रोवाइजेशन, तो वही जो अभी आपको नीलेश जी वाज जस्ट नाउ टेलिंग यू कि वो एक कांस्टेंट अप्रोच है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए आगे। और ये जरूरी नहीं है कि दैट इज द ओनली स्टेज, बिकॉज उसके साथ साथ वक्त के साथ में कंपटीशन भी आता है, उसको स्केल अप कैसे करना है, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते रहना है, कैसे मार्केट फ्रेंडली बनना है, पॉकेट फ्रेंडली बनना है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। फिर आज के वक्त में अभी उन्होंने जिक्र किया कि टेक का कितना बड़ा रोल है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर।
so जिसको हमें आगे करते रहना पड़ता है. So that is what Nilesh ji wanted to convey, and I wanted to add in this. Nilesh, you can continue. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Let's move on. So next, what we come to is the idea validation tools. And I think it was Kajal who had shared that when I had asked the first question itself. So the answer given was idea Mind mapping. generation. Yeah. So what I would like to say that analysis that we were talking about actually falls under this idea validation. That is a tool for idea validation. Now you have thought about a specific business idea. What comes next is validating that whatever you have thought of, whether it has a target market or not. If it has a market, how do you analyze what people are looking for as a solution for the problem you have identified? अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के देना है तो वो मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है, आप किस तरह का एक सॉल्यूशन दे रहे हैं उन्हें जिस सॉल्यूशन के लिए वो पेमेंट करने को भी तैयार हो. See, many a time जब फाउंडर्स होते हैं they think about their idea as being the best idea and they do not look at what the market is saying. क्या ये आइडिया सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम बता रहा है या ये एक ऐसा है जो पूरे मार्केट में एटलीस्ट 30%, 20%, 50% लोगों की प्रॉब्लम है. और अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ अमाउंट देना चाहता है आदमी, जो भी कस्टमर है वो कस्टमर इसके लिए कितना अमाउंट दे सकता है या देना चाहता है. दैट इज समथिंग व्हिच इज of a primary importance for anybody who is starting off the own business or startup. So market research करना और market research करने के लिए या analysis करने के लिए कुछ tools हैं. Again, there are lots of tools, but I am just going to touch upon or give you the names of a few of those tools. First one is Google Trends. So let me know in the chat, how many of you know what Google Trends is all about? क्या आप जानते हैं Google Trends क्या टूल है, क्या करता है? Because ये एक बहुत पावरफुल टूल है फॉर एंटरप्रेन्योर्स और द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स. ये आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता सकता है जो आपको मार्केट के ट्रेंड्स स्टडी करके एनालाइज करने में हेल्प करेंगे. So do you know about Google Trends? Yes or no? In the chat, please. I think nobody is familiar with this. No. Okay. Not an issue. Not an issue. See, it's not necessary always कि आप सारी चीजें जानते हो. And that is the reason during these workshops that we are having, there will be many things जो आपको help करेंगी आगे. Again, SEM. Nilesh, मैं जरा interrupt कर दूं. Yes, please. I would request the participants to be very attentive, because in the physical workshops, they will have to do it themselves. And they will be required to make a business plan based on the ideas which they are able to generate. So apply your mind as you listen to the presentation and later also, till you attend the physical workshop. Yeah, thank you. Carry on. Right. Thank you, Dr. Mathur. Now, next, so there are two more tools. Google Trends is something which is again a free tool. You can just go on Google, type Google Trends, and you'll be able to see about that specific keyword जो आपके बिजनेस का जो जनरेट किया है आपने आइडिया, उसका जो कीवर्ड है उसे लेके आप सर्च कर सकते हैं. उसमें आपको एक ट्रेंड दिखेगा फॉर द लास्ट डे, which you can even search for the last month, for the last year, or even last 5 years. उससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप सर्च कर रहे हैं या जो आप प्रॉब्लम निकाल के लाए हैं उसके बारे में कितने लोग कितने इंक्विजिटिव हैं, उसके सॉल्यूशंस कितने लोग ढूंढ रहे हैं, और क्या
उससे रिलेटेड और क्वेरीज हैं, सर्च क्वेरीज हैं, जिसके बारे में लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू जब आप अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं. I'll talk about one more tool, which is SEMrush. Nancy Srivastav says, I think, sir, we can review the trending topics. Absolutely. So the trending topics can be आपके जो keywords मैंने बताए, वो keywords के through आप इस चीजों को check कर सकती हैं. कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए तो जरा अच्छा समझना है. So I can give you around e-commerce. आप e-commerce में I'll take up an example of my own startup #bazaar, group buying. So group buying का अगर मैं search करता हूँ, I can see a graph which shows up in terms of लोगों का कितना interest है इसके बारे में, वो क्या क्या queries पूछ रहे हैं. It will also give you state wise. It can give you country wise as well. ऊपर आपको वहां पे एक option मिलता है जिसमें आप country भी select कर सकते हैं कि किस country में, उसके किस state में कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं या इंक्विजिटिव हैं, किस तरह की वो क्वेरीज कर रहे हैं गूगल पे, और उन जो रिलेटेड क्वेरीज हैं उनकी भी आप डिटेल एनालिसिस निकाल सकते हैं फ्रॉम गूगल ट्रेंड. सो दैट वाज जस्ट वन एग्जांपल. एआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कोई एआई रिलेटेड कोई एआई रिलेटेड आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, यू कैन एंटर देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आपका एआई किस तरफ है, जेनरेटिव एआई है या कोई और तरह का है. सो व्हाट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, उसके ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए दैट इज अ पावरफुल टूल. द नेक्स्ट टूल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वो है SEMrush. सो इसमें क्या होता है, SEMrush एक अगेन डोमेन ओवरव्यू के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ट्रैफिक का परसेंटेज कितना है, इससे ही आप कीवर्ड्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं. एक वैसे आपको एक पॉइंटर देता हूं, एक बहुत काम की चीज है. आपके कॉम्पिटिटर का अगर कोई वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो भी इस पे डाल के उसके बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ट्रैफिक, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स, दोस डिटेल्स फ्रॉम SEMrush. वन मोर टूल, सर्वे मंकी. आप में से कई लोगों को ये लगता होगा ना, अगर मैं कुछ आइडिया लेके आया हूं तो जो लूं, उनके पेन पॉइंट्स पूछूं, उनसे कुछ ऐसे सवाल करूं जिससे मुझे ये पता चल सके मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना कैसा है. ये एक पावरफुल टूल होता है फॉर गेटिंग द कस्टमर फीडबैक बिफोर डूइंग द मार्केट एनालिसिस. एक आपने ऑनलाइन के लिए सर्च किया थ्रू गूगल ट्रेंड्स, थ्रू फॉर कॉम्पिटिशन एंड अदर्स आपने यूज किया SEMrush, लेकिन गेटिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, you can make use of the tool called Survey Monkey. वैसे और भी बहुत सारे सर्वे के टूल्स अवेलेबल हैं, but this being one of the oldest and one of the I consider it to be one of the best, जो मैंने भी यूज करा है while we were working on #bazaar. So Survey Monkey टूल में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं. इसके कुछ एक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपने सवाल पूछे, उसके कितने लोगों ने जवाब दिए, उन जवाबों के की एनालिसिस की रिपोर्ट, all of this is available जब आप सर्वे मंकी टूल को यूज करते हैं. So that is about some 2-3 tools which I have suggested on idea validation. If you are interested, I also have a course on Udemy which actually is based on the same topic of idea generation and idea validation. So if you are interested, I can share the URL for your reference. But you will get to know about a few more tools of idea generation and how to make use of the idea validation tools, creating a prototype. All of that is available जो Udemy पे course है मेरा. So how many of you are interested? Say yes. Come on. Anyone who wants to know more about idea generation, Kajal. Yes. Kajal says yes. Yes, sir. Ankit. Abhay, Abhishek, Nancy, Isha, Shashank. So many of If you can share the
a link or I'll- something, you know, how they can. All right, sure. I'll just do that. So this is the link. And I usually do it under the name of Learniverse Academy. I also have a YouTube channel. If you are looking at getting some details about it, I can share that as well, probably a little later. However, this is the link to the course on Udemy if you want to attend it. So, Sudhanshu ji, I would request you please provide your valuable inputs around the idea validation as well. So खासतौर पे मैं चाहूंगा आप कस्टमर जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. If you can please throw some light on that. So anyhow, we'll go for the case specific then. So these are certain steps जो Nilesh ji is briefing here, because OYO तो एक success story है, but there are so many other stories which are there. So the idea here is कि एक entrepreneurship आपके लिए कितना important है आगे, because that gives you such a confidence that it helps you in the longer run also, that anything you can take up. कि ठीक है, you are not only dependent on job or somebody, कि okay, we have to do something. So we have to do something under someone. We can start something of our own. It can be a small possible thing also and a large enterprise also. So these are certain things जो एक इसी के लिए ये जो idea generation tools and idea validation tools जो अभी नीलेश जी ने थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर किया है, वो ये कि अगर हम स्टेप वाइज जाते हैं तो हमारा किसी भी चीज का फेलियर रेशियो एंड सक्सेस रेशियो इन चीजों पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. बिकॉज what happens is at times somebody thinks this is the best idea, but that can be the best idea for you, not for the market requirement. So all those analysis को अगर हम करते हुए, discuss करते हुए और एक सर्वे करके अगर हम उन चीजों को फिर साथ में जैसे बताया कि things like कि supposing something is very nice, very exclusive, but अगर वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है तो वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड. सो वो एक आपके इलीट क्राउड के लिए तो हो जाएगा, बट नॉट फॉर द मासेस. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू इंटेंड टू, या व्हाट इज द काइंड ऑफ सर्विस यू हैव इन माइंड, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि जब आप उसको स्टडी करके, डिस्कस करके और आगे उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जब आप, और वो भी ये है कि that requirement cannot be just related to your vicinity or something. क्यों? क्योंकि expand करना ही एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा रोल होता है. तो क्या बाहर में उसकी एक्सेप्टेंस, बाहर मीन्स आउट ऑफ द एरिया वेयर यू आर इन, तो वहां पर उसकी क्या एक्सेप्टेंस है, ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डिसाइड करती हैं ऑन द सक्सेस ऑफ एनी entrepreneurship effort or a startup. Thank you, Nilesh ji, you can carry on. Yeah. Thank you, Sudhanshu ji. Thank you. Thank you for the valuable inputs. Now, एक मिस्टेक करते हैं कई लोग, और वो मिस्टेक ये होती है स्टार्टअप के लिए खास तौर पे, बिलीविंग दैट यू नीड ओनली एन अमेजिंग आइडिया. एक बढ़िया आइडिया आ गया, सब कुछ हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस वे? वैसे एक बढ़िया आइडिया है तो आई एम डन, मेरा स्टार्टअप, मेरा बिजनेस सेट. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस वे? लगता है आपको? जस्ट रिस्पॉन्ड yes or no. No. Okay. काजल says no. तो काजल क्या लगता है फिर? सिर्फ एक आइडिया नहीं तो और क्या होना चाहिए जिससे आपका बिजनेस चल सके? And this question is not only for Kajal, but it is for everyone. सिर्फ एक अमेजिंग आइडिया के अलावा क्या और ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाएंगे ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी? रिसोर्सेज शशांक कहते हैं. ऑलराइट, थैंक यू. व्हाट एल्स?
Blueprint, Ritu says, very good. Thank you. Validation, that you've done. So idea is there, एक amazing idea है और आपने validate भी कर लिया है. Right, Kajal? What next? Okay, let me just move on. Remember Frank Herbert, इन्होंने एक चीज कही थी, ideas are a dime a dozen. I think हर जने को दिन में 25-30 आइडिया तो आ जाते होंगे ना, किसी ना किसी चीज को काम करने के लिए. आते हैं नहीं आते हैं? We should know the right way to implement it. Yes, sir. So Frank Herbert, who was an American writer, had said this कि ideas तो यार दिन में 5 आते हैं, but it is the execution of that idea which counts in the long run. तो actually में वो क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए? First and foremost is passion. Passion is important. उसके पहले वो, उसके साथ आपका वो जोश, वो जुनून होना जरूरी है कुछ करने के लिए. Then goal orientation. What is the goal जिसको आप आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, अपने स्टार्टअप को आगे कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं? Thank you, Nancy. Yes, business plan is what you need. Then decision making ability. आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में डिसीजंस टाइम एंड अगेन लेते रहते हैं. And that is one basic factor which you need to do even when you are starting off a business. Because हर चीज में सप्लायर पे डिसीजन लेना होता है, टीम मेंबर पे डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. यस, थैंक यू नैंसी. टेकिंग रिस्क, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा. Business is always about taking risk. Yes, एक चीज ध्यान रखिएगा, whenever that is happening, it should be a calculated risk. It should not be, नहीं मेरे से ना उस सेशन में बताया था रिस्क लेनी है, चलो रिस्क ले लेते हैं. No. Here, वो think like an entrepreneur. आपको सोचना पड़ेगा वो कौन सी रिस्क है जो आप ले सकते हैं और कौन सी रिस्क है जिसमें आपके लॉस के चांसेस ज्यादा हैं. You need to have an equal balance between what you need to do and how you need to do it. Yes, Shashank, you're right. Entrepreneur should be a risk taker, but always taking a calculated risk. ये नहीं हो कि analysis करने लगे. And एक बहुत अच्छी कहावत लगती है मेरे को, too much analysis leads to paralysis. Analysis करने में इतना ज्यादा समय निकल जाता है कि जो काम होना होता है वो सारा धरा का धरा रह जाता है. So let that not be happening, especially in the case of the startups and businesses. You need to handle pressure. तो एक एंटरप्रेन्योर एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, हर समय हर तरफ से प्रेशर आ रहा होता है. How the entrepreneur is able to handle it coolly and calmly and still take sane decisions, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की. And of course, what you require is the financial and business skill. और इसके बारे में who other than Sudhanshu ji to talk about, because he has been an investor for over 30 plus years. So Sudhanshu ji, over to you, please. Is not working anyhow. So it's a well-known fact. जो be well-known fact, I would not say. So what happens is कि like in last 30 years a lot has changed. First of all, you know. So that is there. But so far, like I have heard around 600 to 700 pitches so far from different startups at different locations at state level and otherwise also. So it's a very difficult thing to take a decision like कि किस startup में invest किया जा सकता है. How can one what are, so certain parameters are there which we keep in mind. First of all, obviously the founder, then
then comes his strength of the idea, and then execution power, how's the team. So ये बहुत सारे कई factors होते हैं. Otherwise, no doubt, as Nilesh ji just mentioned, that endless ideas are there, endless. But main is like, what is a workable thing? What there are two things which are very relevant: sustainability and expandability. So anything you start, what kind of sustenance it has, and your team has. Supposing some kind of idea is there, जिसमें एक आपका कोई app बनना है, or some kind of a software is there. So if that is effective कि 3 महीने में एक चीज या 6 महीने में बन गई, and then you take it forward and उसमें as required उसमें changes करते रहे, उनको improvise करते रहे, then तो it can. But if you feel कि yes, this can go national level and it is taking 3 years plus it requires a lot of funds, so it's a very difficult task. Very difficult, because sustenance is not there. Then अभी तो आप लोग साथ में हैं, college में हैं, you never know. Once you are with your second and third year, तो उसके बाद कौन कहाँ मिलेगा, क्या होगा. So a lot of things are there. So ये सारे के सारे, an idea can बहुत अच्छा idea हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, but उसकी sustenance भी बहुत important factor होती है. And then needs to be seen कि okay, I am with the time, not that कि by the time I am thinking, by the time any big player comes up and he takes care of already उसने एक introduce कर दिया, और आप you are not a known player, तो आपको अपनी awareness कराना ही एक पूरी exercise होगी, और उसके लिए एक social media में एक छोटा सा message डाल देना होगा, okay, we are ready with this kind of a thing. So lot changes there. So these are certain things. So like idea, if it is there, then your team, your co-founder, which you think can be in the coming time, and with the times and the location you are trying, उन सब चीजों का जो combination होता है, that helps and decides कि okay, what is the sustainability of the idea. And then when it comes to us, then it goes to certain people like जो आपकी mentorship भी करते हैं, which helps you कि okay, you feel this is very good, but what industry says and how you can go ahead. So these are certain things which needs to be seen, and that only helps in planning and as well as execution. Thank you. Thank you. So where do you want to be? Do you want to wait for the perfect idea? एकदम perfect कर लूं, इधर से भी उधर से भी, हर सब कुछ करके एकदम perfect बन जाएगा idea, तब करूं कुछ? या फिर pick an idea, do whatever is needed to be done around that, and then with that calculated risk, go ahead, execute it. What would you like to do? Write the answers in the chat. A, wait for the perfect idea. B, pick an idea and execute. Kajal says B. Okay. How about the rest? बाकी लोग क्या करना चाहेंगे? Prityansh B. Okay. Abhay B. Very good. Arpita, Abhishek, Shashank, हर जना क्या है B करना चाहिए. अंकित A करना चाहेंगे. Okay. Nancy B. Nehal B. Very good. Thank you for your responses. So I got one person stating wait for the perfect idea, and the others taking the scale in favor of pick an idea, take calculated risk, and execute. Now remember, if you wait for the perfect idea, usually that never happens. Perfection always will take a long time. नहीं यार इसमें ये और कर सकते थे, अरे इसमें ये और कर लेंगे तो ये हो जाएगा.
So that is something which keeps you on your toes. However, for a startup, as an entrepreneur who's starting something of your own, you need to pick an idea and you need to start the execution after considering कि हाँ यार इतने data में मैं इतना decision लेके let us take this risk, let us go ahead, let us start off and then look into how to manage other things. So I would also be in favor of pick an idea, do the calculation and execute. Remember, execution is the key. And now we come to the business execution planning or the business planning. Sudhanshu ji just mentioned about some very important aspects which you need to consider. Now, I'm just going to talk about 6 things here. And this is something which usually you need to make use of in your pitch decks as well. Because one thing which is very important, especially for scaling up your business or growing your business, is going to be the investment. And in order to do that, you need to create a pitch deck and to present it in front of the VCs or the venture capitalists and the angel investors. In order to do that, 6 things which I'm going to talk about. The first one it should have is the business overview. You need to be very clear and you need to have a well-defined business strategy. How will it move from A to B to C? How are you going to scale it in different cities or in different countries? How is it that you are going to take it from a revenue of say 1 crore to 5 crore to 50 crore to 100 crore and so on? So that strategy needs to be crystal clear and it needs to reflect in one slide itself. Usually this is the statement or which usually is used to emphasize this is what my startup is all about. Have that one statement ready in your mind at all times and on the slide as well. Second, this we have already talked about जब हम idea validation की बात कर रहे थे, लेकिन ये constantly एक चीज याद रखिएगा, बहुत important होती है कि आपने जब पहला आइडिया अपना बनाया था से जब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इनपुट्स आपको मिलेंगे कि आइडिया जो था उससे थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा और चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा और चेंज हुआ, so on and so forth. What happens is your idea evolves. मार्केट से आपको इनपुट मिलता है, कस्टमर्स से इनपुट मिलता है, तो जो आपकी ओरिजिनल थॉट थी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एडिशंस होंगे that it will evolve over a period of time. So you constantly need to keep on doing market analysis. I am sure आप सब लोग बहुत सारे tools use करते हैं. Amazon, how many of you use Amazon or Flipkart or any such tool for shopping? Ankit says both. Okay, no, give me examples of any such thing, anything that you use. Even restaurants में आप जाते हैं, हर जगह एक चीज जरूर मिलती है आपको, कस्टमर फीडबैक. सर कैन यू प्लीज शेयर योर फीडबैक? वो फीडबैक क्यों लिया जाता है? पहले आप सर्वे से कर रहे थे, बाद में वो सर्वे की जगह एक्चुअल वर्ड ऑफ माउथ कहलाता है. यस काजल, इट इज टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट. और ये आपके बिजनेस एग्जीक्यूशन की प्लानिंग, क्योंकि ये भी एक चीज ऐसी है जो कॉन्टिन्यूअसली होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान बना लिया उसके बाद अगले 5 साल 5 ईयर प्लान है, अगले 5 साल तक बिजनेस ऐसे ही चलेगा. मार्केट सिनेरियो ऐसे चेंज होता है एंड दैट वी सॉ ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज वेल, एंड नाउ द मार्केट इज कमिंग आउट ऑफ दैट शॉप. सो शशांक सेज टू नो अबाउट कस्टमर टेस्ट एंड द प्रेफरेंस. यस, तो ये सारी चीजें मार्केट एनालिसिस हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको अपने प्लान में डालते रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा कि वो क्या चीजें हैं जो काम कर रही हैं और वो क्या चीजें हैं जो काम नहीं कर रही हैं. क्या आपका डिलीवरी पीरियड ऐसा है जिसमें कस्टमर्स खुश हैं उससे? क्या आपका कोई ऐसी चीज है जिससे कस्टमर खुश नहीं है, वो ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जिससे ही और शी विल बी मोर प्लीज्ड? All of those things are important to consider while you're doing the market analysis. और अब हम आते हैं प्लान पे. फर्स्ट द मार्केटिंग प्लान.
कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आपके टारगेट कस्टमर्स के बीच में एक कॉमन चीज बन जाए, जिसे एक ब्रांड कहते हैं, या कुछ ऐसा बन जाए जिसे सोते जगते, अब जैसे ओके, I'll give an example of this. How many of you know what is a synthesizer? If you do, आप बस इतना लिख दें I do. सिंथेसाइजर क्या होता है? Can I have some responses, please? Shashank, Shahil, Kajal, Anuja, Deepika, Priyanshi, Naman, Paridhi, Vikas, Arya, Isha. Kajal says no. Nehal. Arpita says I do. Wonderful. बस 2 लोग, मैंने इतने सारे नाम ले लिए यार, come on. Be a sport. Ankit says no. Okay, not an issue. अच्छा ये बताइए, how many of you know what Casio is? Casio? वॉच ब्रांड है, काजल कह रही है, ओके. एनीबडी फ्रॉम म्यूजिक हियर? Analyzing. What are you analyzing? It's a musical instrument, Ritu says. Okay. Okay, yes, I understand. So many of you say it is a watch brand, it's a calculator brand. It is actually a brand. I am telling you one common misconception. मेरा लड़का ना, आपको पता है, केसियो बजाता है, बहुत बढ़िया केसियो बजाता है. I don't know how can you play Casio. Casio is a company name. But usually that misconception is that Casio vis-a-vis the musical instrument जिसपे keys होती हैं, जो keypad आता है, उसको synthesizer कहते हैं. People usually use these names interchangeably. अच्छा, आप में से कितने लोगों के घर में खाना डालडा में बनता है? डालडा में खाना बनता है आपके यहाँ? प्लीज लेट मी नो. डालडा इज नेम. अंकित क्या नहीं बनता? देसी घी में खाते हैं आप? कम ऑन गाइस. ओके, सब कह रहे हैं नो, तो फिर किस में बनता है? देसी घी अंकित कह रहे हैं. ओके, वेरी गुड. प्रत्यांश, काजल के यहाँ ओके ऑयल में बनता है. ऑल राइट. सिनेपोलिस मॉल का क्या नाम है? वेरी गुड, थैंक यू कल मिश्रा. ऑयल घी, ओके, गुड. एक्चुअली इट इज वनस्पति घी, जिसमें यूजुअली लोग कंसीव करते हैं कि वो डालडा ही है. अभी सिनेपोलिस मॉल का क्या नाम है? कर्नल मिश्रा ने एक सवाल पूछा. कैन आई हैव द नेम आंसर्स टू दिस? Yes, correct. One Awadh Center. Very good. Yes, very Thank you, good. Ritu. So now you know, this is what you need to form in the minds of the customer. Customer Cinepolis Mall ना जाए, One Awadh Center जाए. डालडा ना खाए, refined oil खाए. Casio ना बजाए. Instead of that, the person plays the synthesizer. ये marketing plan ऐसा होना चाहिए जिससे customer के mind में ये चीज बैठ जाए. कोई भी बोले AI तो चैट जीपीटी दिख रही है उसे. That is what I'm talking about. As per your marketing plan, management plan, sorry, team and leadership. Who are you? Who is your co-founder? Who are the top team members which your team has? How do each of you complement each other's skills? एक ऐसा प्लान जिसमें ये दिखना चाहिए कि हाँ, फाउंडर और को फाउंडर, अभी जैसे पिच डेक के लिए सुधांशु जी कह रहे थे, उसमें ये दिखना चाहिए कि हाँ, ये जो फाउंडर्स हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं. They complement each other. One is high on tech, the other is high on operations. One is high on finance for a fintech company,
and the other is high on probably the vision creation. One is high on medical ability, one is high on tech for med tech. So these are some examples I'm giving you. So have that management plan in place. Then day-to-day operations ke liye, what are the processes? Are the processes in place? How are you going to look into that? ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है. And last but not the least, what are the future projections? How is it that your firm is going to handle the finances? If the valuation today is say 10 lakh rupees, how much will it be 6 months down the line? How much will it grow over the next 2 years? How much will it grow probably 5 years down the line? Reason being, it is all something which an investor is looking at. How many X is it that we are going to grow? That person is investing the funds in your business. You need to showcase यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम्स ग्रोथ है. यहाँ पे ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट्स वगैरह में होता है ना 10%, 12%, 15%, usually that is not what is looked into. It is 2x, 4x, 8x, 15x growth. 100 रुपए लगाइए 1500 रुपए मिलेगा. That is how your financial plan should be. Right? Sudhanshu ji, your inputs around the business execution planning process, please. I'll just add one thing. कि like you know, जब भी हम लोग कॉर्पोरेट और वो बातें करते हैं ना, वो सीधे सीधे जो स्ट्रेट अवे करोड़ पहुंच जाते हैं ना, that is what I'll not support. तो ये जो ग्रोथ होती है ना 25,000 को 50,000 और 1 लाख करना, that is 4 times growth. 1 लाख को 20 लाख करना is like 20 times growth. और उस 20 लाख को फिर आगे करना. So when it reaches in a few crore, उसको फिर वो धीरे धीरे परसेंटेज में जाता है. बट इनिशियल स्टेज में जो भी आपका है वो that is considered to be basically X growth. वो X growth वहीं से हो रही होती है कि a startup initially is a very small entity and there it grows much faster. बट जब वो एक कॉर्पोरेट बन जाता है तो फिर वो उसकी ग्रोथ में फर्क आ जाता है. When it already, because 10 करोड़ पहुंचने के बाद उसको तुरंत 100 करोड़ करना बहुत मुश्किल काम है. बट 25,000 की चीज को कुछ लाख एंड देन कुछ करोड़ पहुंचाना ज्यादा इजी वर्क है. सो देयर एंड दैट इज व्हाट. और यहाँ हम फिगर्स में नहीं जाना चाहते, आई डोंट वांट, बट मेन इज की लाइक वेदर यू आर ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग और यू हैव दैट पोटेंशियल. वही एक इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि वो एक एग्जीक्यूशन टीम में क्या है. So all this helps, the process helps in taking you to that level and makes you like more stable. I'll not say everything makes you successful, but stable it makes, and then you can really grow from that level. Yeah. Thank you. So that is what Vision Startups has for you in association with LMA today. The journey has just started and there are a lot many things which you need to look into जब आप अपने business की शुरुआत करते हैं. Innovation and entrepreneurship, financial modeling कैसी होनी चाहिए, KRA development, business plan, how to create a lean canvas, आपका product market में कैसे उतरेगा, what is the product market fit, the minimum viable product or MVP, go to market strategies क्या हैं जो आप use कर सकते हैं, and entrepreneurial finance. So these are many such other topics which you will need to learn as you get into this journey. And that is what I have for you. In case if you're interested, I can share as per Mr. Mathur, if you suggest, I can share the links to my channel as well for the benefit of the participants. Yes, Thank you. please do it.
Thank you very much, Nilesh. अब इसमें participants से मैं पूछना चाहूँगा, what is your reaction or what is your feedback to what you have heard? Does it interest you to write a plan, generate some ideas? What I would suggest that you make groups of 2 or 3 students, your colleagues, and generate some business idea for a startup. You can act like a board of directors and generate a business idea and try to write a business plan on the lines of what you have heard so far. Now tell me how many of you are interested. Say yes. Okay. You will be you will be given all the support to yes, Ankit, yes, Arpita, yes, Abhay, yes. Very good. Deepika. Now tell me, very good. I think there are quite a few. Okay. If there are more, you can say yes. Nihal Kumar Shah. I'm very happy. Shahil Qureshi, yes. So, how much time you think should be enough for you to prepare a basic business plan after you have brainstormed the ideas and you have thought about something? Say 3 weeks, okay? 2 weeks or 3 weeks? Write the duration which you need to develop a business idea and a business plan. 3 weeks enough. Arpita says 3 weeks enough. 3 weeks. Most of you are saying 3 weeks. Okay. So what do? We would like to come to your institute 4 to 5 weeks. 3 weeks. I think most of you are saying 3 weeks. So write the name of your institute and write 3 weeks in front of that, so that we plan a visit to your institute. And during that period, you will have to work in groups and create a business plan. Don't worry about the quality of the plan or anything. You will be provided the inputs in the workshop, in a physical workshop. Just write SMS or IILM, whatever the name of your, okay, 3 weeks. I hope Renu is noting IILM. Five weeks ILM. I think 5 weeks is too much. No, 5 weeks. Of course, 3 weeks. 3 weeks. Stick we'll to stick 3 to 3 weeks. How many from IILM are there? IILM 2, SMS, Kajal Kanodia, 3 weeks. Most of them from IILM and SMS. But only 2 from IILM, I can see. How many from IILM? Well, if there are 2 or 3 groups, okay, because Dr. Neha, how many of them are hello? Dr. Neha is there? no, I don't think. No, let's do one thing. Let's plan a visit to IILM and SMS somewhere after 3 weeks or so. Okay? And yeah, I can see quite a few from SMS.
So make groups of 3 students and brainstorm on an idea and try to write a business plan. If you need any support, is it possible, Nilesh, to give them this PPT just for their guidance? Or what we can do, we can circulate the recording. Renu, is it possible to circulate this recording so that they get some support in writing the whole thing before the workshop? Is it possible? But those students who are interested, I'll give them my number. They can message me and I'll send them. I think that would be a good idea. I'll put my just number in the chat box. So if chat box, anybody needs, so just please send me a message and I'll send you the links. links and also if you This can get recording also. Nilesh, is it possible to give the write up or the this PPT. PPT? So ideally, we usually do that for the Vision Startups trainings and all. Okay. So I'll discuss it up and then I'll let you know. Okay. If that is fine. Okay. Thank you. So has everyone, have you noted Renu Chaudhary's phone number? 875. Renu, speak out the number also. Yeah, it's 8756096128. So you can directly send me the message, hi, whatever, and I'll whatever you required, I'll just share with all the details with you. If you need a recording, if you need a link or any type of presentation, I'll share with you because we have already done 2 or 3 webinars also. So we can also share that also with you. So is that okay? Anybody who wants to ask anything? Any participant? Any question? Okay. No question, I presume. So no question. Okay. So thank you very much. Thank you, Sudhanshu. Thank you, Nilesh, for your excellent presentation. And I can see the interest amongst the participants, and we look forward to their more proactive participation by trying to write a business plan. That would be a very big thing. And let me also assure them that we will mentor those who are really interested and want to take it forward, provide the guidance and support, and later on incubation if necessary. So that's all from us. Thank you, everyone. Thank you, Nilesh and Sudhanshu. Thank you, sir. It was a pleasure. It was, Thank you, all of you, for being wonderful participants. Thank you. We would So that certainly be very keen to support, a few success stories happening here. let's see. I think those who try will certainly succeed. Yeah, I think the key is for trying. for trying, So, yeah. so that these workshops will give them this opportunity of making an effort. So thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. So I am signing off. Okay, thank you all the students for the active participation, and I hope you people had learned something from this webinar, and we expect very soon a good business plan presentation from your side. So we'll contact your faculties by fixing the date so that they will let you know when our physical team will be coming for physical presentation. Thank you. Bye.